Hi, this is Kanika Dhillon and you're watching Bollywood Hungama. We have this celebrated writer, Kanika Dhillon. She's had a tremendous year. She's had Manmarziyaan, which has been hugely appreciated by anyone and everyone. And recently she's had Kedarnath, which has been won over by the people. Pleasure having you on Bollywood Hungama, first of all. Thank you. I've met you several times. I know, we've met. So how do you look at the year gone by as a writer? You know, it's been really beautiful. 2018 has been a very fulfilling, very beautiful year. And when I look back, you know, apart from the fact that Manmarziyaan got a critical acclaim and love, and Kedarnath was loved by the audiences, what is also very fulfilling is that my team, the team that I worked with, primarily my directors, the films also contributed to, you know, I'm told that this is Anurag's most commercial film, and then this is Gattu's most commercially successful film. So that's also very fulfilling that the team that I'm collaborating with has also kind of found some landmarks with these stories. And not only the directors, even the actors who played the characters, be it Tapsi as Rumi, Vicky, Abhishek Bachchan as Robbie, Sara Ali Khan as Mukku, Sushant as Mansoor, they've been really loved in these characters. So it has been a very fulfilling year overall for my actors, for my directors, and for the love that these films have got. So I'm very happy. And I also would like to mention that 2018, not only for me as a writer, but I think 2018 has been a beautiful year for content creators in general also, you know. We've had Badhai Ho, such a beautifully written, unassuming film that has been really accepted by the audiences. We've had Razi, we've had Andhadhun. So it's been, I think it's the best time to be a storyteller right now, because suddenly the formulas जो हमको लगता था ये चलता है और ये नहीं चलता, अब कोई definition ही नहीं रही. And जहाँ पहले लगता था कि maybe we will not find an audience for these stories, there's an audience for every story now, because digital has come up and, you know, the rules have changed. So I think 2018 is a beautiful time of change and a beautiful time for storytellers to tell all kinds of stories. Alright, so talking about specifically you, Manmarziyaan, one of the best reviewed films of 2018, surprisingly doesn't do as well as was expected on the box office. Does that take away from the sheen of what you guys went out to make in the first place? Not really, because I'll tell you, when I was writing Manmarziyaan, there was this thought in I knew that I'm not writing a film or writing a character which is representative of a mass society. You know, we live in an India which has very different realities. You know, there are different Indias. There's a different India on Twitter and Instagram, and then when you step out, there's a different kind of a reality itself. There are lynchings that are happening. There's this whole Hindu-Muslim politics which is very, very evident, and you know, it's a reality. So I was aware of the fact that Manmarziyaan is a section of the audience where personal conflicts, Tinder generation, love, where we question marriage, you know, there is a mindset like that which exists because of the kind of lives we are leading, the kind of, you know, the new generation that is coming about. But is it reflective of an entire society? Perhaps not. Was I aware that it is going to start a debate, a discourse, or make people uncomfortable? Yes. Was I aware that films that make people uncomfortable with a certain kind of, when it questions your, say, marriage, or talks about infidelity, or talks about like romance not shown in a very romantic form, was I aware that it could be rejected by people, or it could make them uncomfortable? Yes, that was always there. But what was really heartening for me was that it did find an audience, and it did find love, and it did acknowledge the kind of the voice that I wanted to bring, the characters that I wanted to bring forth in the story. And Anurag Kashyap was like the best director to kind of bring the story forward. He just goes hammers and tongs, if anything. Yeah, he's one of the best directors in the country. His film, yeah, I just wish, you know, that like more and more audiences get a chance to kind of see his stories. So now, uncensored version has gone on Netflix. So do you feel it's a victory of sorts, maybe for Anurag, for what he stood for? Absolutely. There was no reason to make any cuts in the film. And I very strongly believe that we should not cower down
to these demands of censorship, because we have a regulated authority. We have the censor board who has passed these films, who've done thorough with due diligence. They have given a certificate. So even if there are fringe elements who are questioning this, we should not. There was no need to kind of make those cuts. And censorship, the way, like even in Kedarnath, it's banned in Uttarakhand, for example. I think it's a very senseless concept which we need to fight in this day and age, because we have these extreme voices that are kind of shouting very loudly, and the only way to kind of counter is to put your point of view across and not give in. So I think Kedarnath also had nothing that was divisive or polarizing. It was a film about coming together. And Manmarziyaan had, and if a woman, the main problem was that how is a woman thinking about her lover in standing in a gurdwara? My thing is that how can you decide what a woman can think and not think about, or what emotion can she go through if she's standing in a holy place? It was a very bizarre kind of an argument. So I feel it's great that a full version has come out on Netflix, and I think we should not give into these extreme voices of ban this, cut this, censor that. It's not healthy. So there were these wonderful blogs which were written once the movie came out, Manmarziyaan, that talking about the entire Amrita Pritam and Imroz and Sahil Ludhianvi part. So you give references, you give hints during the film, you give an acknowledgement in the beginning as well. Do you feel that maybe if that aspect would have come out in the open during the promotional stage, maybe it could have created a different sort of curiosity around the film? But I'll tell you, I myself didn't know that there is so much of Amrita Pritam and Imroz's love story in that narrative. I used her poem for that one moment because I felt there was an instinct, overwhelming instinct, that these lines kind of define this moment very beautifully. Hence, I used that poem at Anup Milangi during an interval sequence. But trust me, there was no, in my head, in my conscious head, I was not kind of recreating any sort of love story or Amrita Pritam's life or whatever. It was just after the film came out and people kind of saw it, and then there was this reference to Amrita Pritam's poetry, and then it so happened, and when I thought about it, when people were talking about it, I was like, oh yeah, there are a lot of similarities, and it could be construed as, okay, there is a kind of a reference that's going through, but actually not. While I was thinking of Rumi, it was Vicky or Robbie, it was a very, it was today's characters who are kind of in a landscape where you have a Tinder and you have arranged marriage and you have women making choices, personal, professional, sexual. I mean, it is very today, and it had no reference of sorts to recreate any kind of a love story in the past. But yeah, so it was as an afterthought when, like you're saying, a lot of blogs and a lot of people started writing about it. It did occur to me then that yes, some similarities are there, but not consciously. Talking about Kedarnath, as you mentioned, it has been banned in Uttarakhand. When it started trending, when the movie released and it was trending, and so I was just looking at this one reference again and again, and they were saying that ऐसा दिखाया गया है कि एक मुसलमान फैमिली को उत्तराखंड मतलब गांव से जाने के लिए, केदारनाथ से जाने के लिए बोला गया, इस वजह से प्रलय आई है. I was like, ये पिक्चर में कब हुआ? Exactly. So and that reference, because आजकल तो ये होता है ना कि एक चीज़ को बार-बार वो डाला जाता है हैमर करके, I don't know कहाँ से वो मैन्युफैक्चर होती हैं चीज़ें. So I was like, this is entirely just besides the point. From what I understood was कि जब प्रलय आई तो सब एक हो जाते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा कौन पावरफुल, सब एक हो जाते हैं, because they become so vulnerable in front of the tragedy, in front of the tragedy. That's what I construed. But there are wise people who think otherwise. But I'm telling you, this year I've also learned this कि आप एक फिल्म बनाते हैं, पर फिर जो लोग फिल्म देखते हैं वो भी एक फिल्म बनाते हैं और वो एक और कहानी लिखते हैं. Sometimes I feel इनकी कहानियाँ हमारी कहानी से better थी. Sometimes when they start making their own stories which don't even exist in the narrative, like जैसे कि आप बोल रहे हो कि वो मुसलमान उनको बोलते हैं चले जाओ तो प्रलय आ गई, मतलब ये एक अलग ही कहानी है. I mean, you can't. It's something that you can just smile about, because sometimes people want to see what they want to see. उनके दिमाग में एक context है और वो उसी के अराउंड अपनी कहानी बनाएंगे, तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते. बट जैसे कि आपने कहा केदारनाथ में the takeaway was this only, that
this calamity is a leveler. मतलब उसके religion if anything is not going to be our savior, humanity and kindness is going to be our savior. Ultimately जब प्रलय आई तो आपका धर्म आपको नहीं बचाएगा, आपकी इंसानियत आपको बचाएगी. And that is the main thing about Kedarnath. And apart from that, there were other issues that we did touch upon, like, you know, why it was a man-made disaster, why sometimes greed in the name of religion can kind of, create this imbalance, and why we have to be very responsible even when we are, जैसे वो बोलता है कि वादी सह नहीं पाएगी, इतनी बनाई वादी सह नहीं पाएगी. So these are very pertinent. They have nothing to do with Hindu-Muslim divide or nothing. It is a very, he's talking something which is very practical, which we need to take cognizance of. And these were the things that we did touch upon, and of course there was this love story which kind of brought everything together. तो इसमें कुछ polarizing और कुछ divisive नहीं था. And ये चीज़ें जो बोल रहे हैं कि जो उन्होंने साइड स्टोरीज बनाई हैं, ये वही एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि हमने तो ये लिखी नहीं और ना ही ये दिखाई है. जैसे आपने मेंशन किया कि जो मेन पॉइंट था कहीं वो उसको बिल्कुल खो गया. एंड जैसे आप अभी बता रहे थे कि दैट ये भी कहा गया कि दैट सुशांत सिंह तो राजपूत हैं, आपने उसको मुसलमान कैरेक्टर कैसे बना दिया? हाँ, मैं आपको बात बताती हूँ. बहुत कैसे बनाएंगे आप लोग फिल्म में? There is a lot of irony, you know, in a lot of statements that were made around Kedarnath. पहला कुछ लोगों ने उठ के बोला कि बड़ा ही क्लीशे है, हिंदू मुस्लिम कहानी बहुत क्लीशे है. तो एंड फिर कुछ लोगों ने बोला अरे राजपूत है सुशांत सिंह, उसको मुस्लिम बना दिया, और सारा अली खान मुस्लिम है, उसको हिंदू बना दिया, उसमें भी दिक्कत है. अब आप मुझे बताइए कि अगर हमने इतनी क्लीशे स्टोरी लिखी है तो ये नैरेटिव्स कहाँ से आ रहे हैं? ये क्यों इतनी दिक्कत हो रही है कि एक हिंदू को मुस्लिम कैरेक्टर बनाया और एक मुस्लिम को एक हिंदू? दैट मीन्स दैट अगर आप बॉम्बे से इंस्टाग्राम और ट्विटर से बाहर जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम आइडेंटिटी इज नॉट अ क्लीशे, इट्स अ रियलिटी. हमने देखा है लिंचिंग्स हो रही हैं, लव जिहाद की कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं. आई विश दैट आई वेक अप वन डे इन एन इंडिया in which Hindu-Muslim conversation is a cliche. In real life, it is not. We are living in a la-la land. If we are not acknowledging the times that we are living in beyond Twitter and beyond Instagram, then we are doing a great disservice to our own selves. We can't turn away from the fact that अगर आप मुंबई से बाहर जाते हैं या आप छोटे शहर में कहीं जाते हैं तो एक हिंदू होना, एक मुसलमान होना defines your actions, your reactions, your safety और sometimes your life and death also. आप उसे नकार नहीं सकते. और अगर इस कहानी में ये दर्शाया गया है तो ये क्लीशे बिल्कुल नहीं है. इसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जिनकी एक रियलिटी है, जो इससे समझेंगे और इससे महसूस करेंगे. they'll have an emotional experience. And I'll tell you something, Manmarziyaan is a relevant story of one aspect of our generation, but Kedarnath is a more relevant story because it resonates with a larger percentage of people. Because उनको ये समझ आता है कि एक हिंदू होना और एक मुस्लिम होना एक की आइडेंटिटी है अभी भी, तो एक कॉन्फ्लिक्ट है. एंड मैं तो बहुत खुश होंगी कि अगर आई वेक अप टू इन इंडिया वेयर हम एक दिन उठें और बोलेंगे अरे ये हिंदू मुस्लिम डिबेट तो एक क्लीशे है, अब इसके बारे में बात नहीं करते. आई प्रे that day comes. But I think things are changing. A lot of people, they definitely are saying that why are we only discussing Hindu Muslim and not concrete issues like jobs. But let me tell you one thing. अब मैंने आपने जो फिल्म देखी है तो अभी भी सुशांत घंटी बजाता है, पंडित जी उसे रोकते नहीं हैं. हम दशहरा, दिवाली, ईद सब साथ मनाते हैं. ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा कि आप एकदम से. बट हाँ, क्या एक ग्लास सीलिंग है जहाँ पर हम अभी भी एक दूसरे से वो ग्लास सीलिंग हम तोड़ नहीं पाए हैं? क्या हम अभी भी बेधड़क होके एक हिंदू क्या एक मुस्लिम के घर जाके बोल सकता है कि आई वांट टू मैरी योर डॉटर? Have we reached that stage? Maybe not. Are we getting there? Maybe yes. Now तो I think we are going in the reverse. हाँ, मुझे तो exactly अब तो लग रहा है कि अब तो लग रहा है कि हाँ, अब तो लग रहा है कि गोली बज जाएगी, कोई गुंडे आ जाएंगे घर पे. Now we are regressing in fact. Yeah, now we are. Absolutely. So that is why I feel Kedarnath is more relevant than even a Manmarziyaan in today's scenario that we are living in. But the critics don't feel like that. They were not very kind to you. You know. It's ironical. It's ironical that you had the best of reviews for Manmarziyaan, but maybe box office could have been better. And the critics of Kedarnath, they were not very kind. And the movie is still doing well, even when Zero has released. It's still
one of the better preferences of people? See, I've just written an open letter to the critics where, you know, I have, and not all of them, I wish to kind of make it clear here that it is for some of the critics, which I will come to later. But, you know, as I was, my mother is a professor of literature, and मुझे हमेशा से सिखाया गया है कि, you know, जो critics होते हैं, आपने novels लिखी हैं? हाँ, मैंने novels, I'm an author, so obviously I'm very, always, you know, an author is always like looking forward to what the critics are going to say about their work, etc. So my tuning is such कि मैं बहुत इज्जत और बहुत I really look forward to कि इन critics का क्या review होगा, because they are the ones who apparently know the medium better than the general ऑडियंसेस, कि वो बारीकियां पकड़ पाएंगे जो शायद ऑडियंस ना पकड़ पाए, कि वो एक मतलब जैसे हमारी इंडस्ट्री है, जो हम फिल्में बनाते हैं, जो हम नया काम करना चाहते हैं, तो कभी कभार ऑडियंसेस तक वो बात ढंग से नहीं पहुंचती, बट ये लोग पकड़ लेंगे कि हाँ ये सही था, ये गलत था. तो दे आर द मास्टर्स, दे आर द एक्सपर्ट्स, एंड यू लुक फॉरवर्ड टू व्हाट दे हैव टू से. नाउ मनमर्जियां, यस, मनमर्जियां में एक नई टेलिंग थी, जो द कैरेक्टर्स वर सेइंग समथिंग डिफरेंट, दे वर kind of, the female character was unapologetic. So, कुछ नयापन उनको दिखा जो उन्होंने, it questioned the status quo, it questioned marriage, it questioned love, it kind of the messiness of relationships. तो उन्होंने उसको applaud किया, और it was one of the best evaluated films. But I knew कि केदारनाथ में, the way I wrote केदारनाथ, मनमर्जियां एक different कहानी थी, जिसका attack और जिसकी telling और जिसकी लिखाई एक different तरह की, you know, it demanded a different kind of style of writing, and Kedarnath demands the kind of story it is, the kind of audiences that I wanted to reach out to demanded a different kind of telling. उसमें मैं ज़बरदस्ती एक edginess, एक unpredictability लाना ही नहीं चाहती थी. It was written to a very different format. It's fine that the critics did not, could not see it, or did not see it, or did not feel like that. It's their opinion, and I completely respect it, the people who did not get it. But I very consciously did a very different kind of telling for that story. And it's, some of them did not agree with it, that's fine. But primarily it was for the audience, and I did get that validation from the audiences. Okay, Dana. Ironically, Manmarziyaan, you had the best of reviews, but the public opinion was that maybe the second half was slightly slow, and that was the public opinion. Now, talking about various issues, so you were talking about this entire Hindu-Muslim debate. Naseeruddin Shah Sahab has been in the midst of this entire debate, where he said that the murder of a policeman in Bulandshahr is being sidelined, and who killed the cows is being given more preference. So obviously there is a lot of whataboutery, and stone pelting in Kashmir has been brought into the picture. He has given an interview today. He has said that there was absolutely no reference to that. So why can't we stick to the context of what I'm talking about? So obviously whataboutery is something that has happened off late, which is really bizarre. So he's been told to go to Pakistan, and reference to Gulfam Hassan from Sarfarosh, and where he was in 1984. So how do you look at this entire bizarre chain of events, that if anyone says anything, the way they are lynched? They're attacked. Yeah, they're lynched. Literally lynched. You know, I come back to my point of, again, why this is such, this thing of Hindu-Muslim is so relevant today. Because this is the time when moderate voices need to be talking and saying and shouting as loudly as these extreme, because मैं नहीं मानती कि हिंदुस्तान में लोग, मेजॉरिटी के लोग ऐसे सोचते हैं, जैसे कि ये कुछ लोग उठ के बोल रहे हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, सरफरोश का रेफरेंस, एंड कैसे बोल दिया तुमने. I don't believe, we have a history, you know what our history is. We've always lived together, we are a very tolerant nation. I refuse to believe that this is a representative of a mass in our country. But what I'm a little sad about is that where are those these moderate voices also need to step up now. Yeah, they're silent. They are silent, and that is the biggest disservice today, because today is the time when you have an opinion and you feel that something is wrong, you need to stand up and say it, because the people who are going out and saying it are going to be targeted. So this is the time to stand up and be by their side, because staying silent is now not just being neutral, it's choosing a side in the times that we are living in. And I think it's ridiculous. These arguments have no, I mean, we should, earlier हम पहले बोलते थे चलो ये कुछ लोग बोल रहे हैं बोलने दो, इग्नोर करो, बट अब वो इग्नोर करने का भी टाइम नहीं आ गया, क्योंकि the times that we are living in is digital age में आप कुछ भी बोलो आग की तरह फैलता है. तो अगर नेगेटिविटी इतनी आग की तरह फैल रही है, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो लोग न्यूट्रल हैं, जो लोग who do not agree with these voices, they need to come together and speak louder. So I think that
I think the only way to counter it is that the moderates and the people who have been silent and who have these platforms need to use these platforms and come together in support of this, of the people who are speaking out against these extremist and polarizing views. Once again, I would say the word ironical because it is said कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारे साथ में बदतमीजी होती है और हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश की जाती है. But there are people who are standing up. Naseer साहब Ajmer, he couldn't inaugurate the Ajmer Literary Festival. There were attempts to heckle him. There were attempts to there were threats given to physically harm him. So, but he has given the interview today and he is saying that I stand by whatever I said. Which is fantastic. Okay, he should be applauded for Imran it. Khan should just mind his own house. He should get his own house in order. And the fact is that my brother has served in Indian Army. My uncles have served in Indian Army and police force. So I don't have to give explanation to anyone. I'm not going to justify anyone. So he stood his ground. And after a point of time, they will back off. Absolutely. But the argument that we hear is that if we say something, so bad things happen to us. You're a writer. What is the importance of courage in times when your voice is being attempt is being made to silence your voice for saying forcefully. what you when you're attacked for your point of views. You know, like I said, you know, it has been never so important as it is now to kind of speak out, which I've been saying throughout this interview. And voices like Naseer sir, and you know, they should be supported. People should come out and support. And हाँ, I understand कि दिक्कतें होंगी क्योंकि ना हर समय की अलग लड़ाई होती है. If you see the history of how, you know, we've evolved as a nation, different kinds of battles needed to be fought at different times. Right now, the battle that we are fighting is that of perception and starting narratives because of the times that we are living in, because of this digital boom. अब यहाँ पर ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? ये लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाएगी कि ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, ये लोग जो हैं, ये अपनी बात रखेंगे इन पे, एंड दिक्कतें आएंगी. Of course, you're going to get you know, attacked for it, but this is the battle that we have to fight. I mean, and that's a choice that you make. That ठीक है यार, हम हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, हम क्यों बोलें? But अगर तो फिर then that means you are removed from, then that means you've decided that I will not be a part of this change or this chaos that's happening. I just feel that आज के दौर में अगर आप न्यूट्रल हैं या आपने अपना जो आप सोचते हैं वो आपने आगे बात नहीं रखी, that is a disservice to the times that we are in right now. ये इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है. पहले शायद ये 10 साल पहले शायद इतना इम्पोर्टेंट ना होता, बट लाइक आई सेड कि हर दौर की एक अलग लड़ाई होती है. इस दौर की लड़ाई है इंफॉर्मेशन, नैरेटिव, ओपिनियन, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारी सोच कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करी जा रही है. जो नई पीढ़ी आ रही है, यंगर जनरेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, आई फील यू नो द कॉन्टेक्स्ट that are being set, the narratives that are being set by the people who have the power to buy media, to set context, to set narratives, that is being manipulated. तो ये एक अलग तरह की लड़ाई है और ये लड़ाई को आप कैसे लड़ सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका ओपिनियन है, अगर आपको लगता है ये गलत है, तो आपको बाहर आके कहना पड़ेगा ये गलत है और ये क्यों गलत है. और हाँ, उसका बैकलैश होगा, डेफिनेटली होगा. Are you prepared for that backlash? I hope we all are, because we are in it together. Ultimately, यही तो रहना है. And you can't be out of it. And especially it holds true for, and I also understand कि आप soft target हैं, people who are celebrities, big stars, you know, it can be a nuisance, they can be targeted, it can create a lot of complications. अब आप लड़ाई में उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं, तो obviously it's not going to be easy. So I think it's a choice that you make. You've been closely associated with Anand sir, the producer as well, on Manmarziyaan and Zero. You've seen how he worked on the movie. So when a movie that you're so closely associated with, the way Anand sir was, and maybe it is not just received the way they must have envisaged. How do you look at it, someone who's known him from close quarters? You were there at the press screening the other day as well. You've worked with Shah Rukh Khan as a script advisor in the past. Yes. So how do you look at it? Is it heartbreaking in a way? See, you know, as my views on Zero are out there for everyone to see, I feel कि it was a great attempt. There were so many things that one loved about Zero, and ठीक है, some things did not connect with the audience. But how was it? I think it's very commendable to see Anand sir, like I know him personally and all that. You know, he's a very balanced man. वो जमीन
जल्दी नहीं छोड़ते। आपको पता, आप भी उनको जानते हैं, आपने उनसे काफ़ी मुलाकात बातचीत आपकी हुई है। आई थिंक ही इज़ वेरी बैलेंस्ड, ही कैन बी वेरी रैशनल अबाउट दिस होल थिंग। एंड यू नो विद ज़ीरो ऑल्सो आई थिंक इट वॉज नॉट कि अरे ये क्या हो गया, मैंने उनको ऐसे हताश होते हुए या ऐसे बिखरते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग टू सी हिम टेक स्टॉक ऑफ कि ओके व्हाट हैपेंड, वेयर perhaps we have gone wrong and where we didn't go wrong. And the best thing about Anand sir was that he accepts, and he told me, beta ye everyone has a right to their opinion and it's fine, there is no problem. So that is something which is very that calmness and that maturity and that whole rational thing, that okay, if you've loved it, it's great, and if you've not liked it, it's great, if you've hated it, that's also fine. That's your opinion. So that is what I have seen of this. माई पर्सनल व्यू वो स्पेसिफिकली, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे ये लगा, मेरे को सारे क्रिटिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को सिर्फ एक उस चीज़ से प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों ने या एक दो लोगों ने एक वर्ड का आपने लिख दिया फियास्को। अब 3 साल, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट ज़ीरो, एनी फिल्म, बीट एनी, आप कोई भी फिल्म उठा लीजिए, आप एक क्रिटिक हैं, आप या तो बोलिए कि आप क्रिटिक नहीं हैं, आप सिर्फ एक ट्रेड की नंबर देते हैं, पर अगर आपने अपने आप को क्रिटिक का दर्जा दिया है तो क्या आप एक वर्ड में एक पूरी फिल्म डिसमिस कर सकते हैं? क्या आप मुझे कह रहे हैं कि आपको ज़ीरो में, अगर क्योंकि हम ज़ीरो की बात कर रहे हैं तो ज़ीरो की या फिर किसी भी और फिल्म में, क्या आप एक वर्ड में उसको डिस्क्राइब कर देंगे ब्लॉकबस्टर, आउटस्टैंडिंग, फियास्को, रबिश? डू यू थिंक इट्स करेक्ट? नंबर 1। नंबर 2, देन आई ऑल्सो क्वेश्चन दैट अरे अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप में और वो जो टिकट खरीद के ऑडियंस गई है और बाहर आई है, वो बकवास पिक्चर है, आप में और उसमें क्या फ़र्क हुआ? मैं ये नहीं बोल रही कि आप 2 लाइन लिखिए कि अरे कितना अच्छा अटेम्प्ट था, बट मैं ये नहीं बोल रही कि आप उनको बी पॉजिटिव। अगर आपको फिल्म पसंद नहीं आई, इट्स योर ओपिनियन, परफेक्टली फाइन, बट आप इतने डिसमिसिव कैसे हो सकते हैं? फिर आप क्रिटिक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्रिटिक देन? कि आप वो फिल्म टोटलिटी में देखिए और आप हर चीज बोल दीजिए, ये अटेम्प्ट हुआ, आई फील दैट दे ट्राइड दिस बट दिस ऑल्सो डिडंट वर्क, विच इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो दीजिए, थोड़ी रिस्पेक्ट तो दीजिए काम की। मुझे उस बात से दिक्कत हुई, एज अ स्टोरी टेलर मुझे उस बात से दिक्कत हुई कि कितना वक्त और कितने लोगों की मेहनत, इतना एफर्ट जाता है। आप 4 लाइनें लिखने का अगर आप मेहनत नहीं कर सकते कि अरे ये इन्होंने ट्राई किया पर मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है, I mean that is still respectful. I just find the way it's done by some critics, I mean I'm not talking about critics in general, we have some fantastic critics in this country and I have utmost respect for them, but some of them who have a large following, can I please tell you, the reason why it bothers me also is that you are in a position of power to influence. Look at the database, look at your followers, and in this day and age आप कुछ भी लिखते हैं उसका एक असर होता है, तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि एक पिक्चर चलाना आपके कंधों पे है, बिल्कुल भी नहीं, बट क्या काम ऐसे पूरा डिसमिस कर देना, इज इट रिस्पॉन्सिबल? आप खुद सोचिए। अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि आप बोलिए कि अच्छी पिक्चर है, मैं बोल रही हूँ कि आप उसको थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए, दैट्स ऑल। नाउ you also had this distinction in a way, I would say, that you've been associated with Ra.One, another film that a lot of people they have loved. I think kids especially liked it a lot. But in general, people didn't like it that much. So you have written the screenplay and dialogues of the film. Yeah, one of the writers. Yeah. So and so I was speaking to Mr. Shah Rukh Khan recently, and he said that he would be keen to make a sequel to Ra.One. How to look back at Ra.One now? Some amazing songs, songs that they did exceedingly well, and a concept mounted on a big lavish scale, but maybe did not appeal. To a wider audience. Yeah. See, I'll tell you, Ra.One again was a very emotional experience क्योंकि मैं आई थी अपनी पढ़ाई वगैरह ख़त्म करके, I started as an intern रेड चिलीज़ में ही। मैंने काफ़ी अपना इनिशियल वक्त रेड चिलीज़ में सीखते हुए, फिल्म मेकिंग सीखते हुए बताया, बिकॉज आई डिडंट हैव द टेक्निकल नो ऑफ हाउ फिल्म्स वर मेड। ऑलवेज वांटेड टू राइट, बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द मीडियम फर्स्ट कि ये होता क्या है। पहले मैं तभी लिखूंगी जब मैं जान जाऊंगी कि ये क्या मीडियम है। तो मेरे लिए वो बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स थे। एंड जब तक Ra.One शुरू हुई, द फैक्ट दैट आई कुड सिट इन अ रूम विथ सो मेनी अकम्पलिश्ड राइटर्स, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो ये लोग सुन रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है एक डिस्कशन में। सो Ra.One प्राइमरली वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, अ वेरी इमोशनल
experience because so many people that I was so close to, I was working with them, and a great learning because मेरे लिए it was like one of the first to be able to sit with David Benulo जी थे, वो हॉलीवुड से आए थे, मुश्ताक शेख, Niranjan, these were guys who had done so many films and I'd looked up to their work and all that. तो उनके साथ एक कमरे में बैठ के एक डिस्कशन करना भी एक एक्सपीरियंस ही था. So that was the journey of it, and it was very, very for me a new experience, a great experience कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ कि मैं अपना कुछ 2 bits दे पाऊँ. फिल्म को ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, ऑफ कोर्स इट वाज डिसहार्टनिंग कि लोगों को इतनी पसंद नहीं आई. उसमें भी बहुत चीज़ें, बहुत मेहनत, बहुत कुछ नया दिखाने की कोशिश की, बट दैट्स फाइन. मतलब यू अल्टीमेटली मेक एन एफर्ट. ओके, सो you're having mental है क्या is your next film? What is it all about? Too early to say more about it, but I'm very excited. It's a psychological thriller, very entertaining psychological thriller. At least that's the attempt, and something again, hopefully very different as an experience for the audiences. And posters वगैरह से आपको थोड़ा तो कुछ अंदाजा हो ही गया होगा कि insane is the new sane, and again it kind of breaks the boxes, and एक नई सोच डेफिनेटली है, बातचीत डेफिनेटली होगी, तो एंड एंटरटेनिंग होपफुली होगी, क्योंकि मेरा जैसे कि मैं किसी को बता रही थी आज सुबह कि मैं आई हैव कम फ्रॉम अमृतसर, और अमृतसर में हमारी एक ही आउटिंग होती थी कि थिएटर जाके पिक्चर देखना, और वहाँ पर आप यू यूज्ड टू बाय द टिकट, यूज्ड टू सिट देयर, एंड if you don't have an entertaining experience, and by entertainment I don't just mean laughter, and engaging emotional experience is entertainment. Absolutely. तो I used to feel कि यार पूरा हफ्ता खराब हो गया है, मतलब अभी पिक्चर देख के आए. So films are so because we don't have any, like I've grown up only in Bollywood, and as most of the country has, because हमारे पास recreation के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ हम this is our only recreation, this is like in our blood and bones. So my biggest fear is also that कि I hope I am able to entertain them, or they can hate me or they can love me, but they should not ignore my work. मतलब that is very hurtful. तो even mental में ये है कि I hope there's an interesting emotional experience, emotional engagement and entertainment along with something which is like new, which is a thriller, and Rajkumar and Kangna. I've been very lucky, I must say, कि मेरे को बहुत, मेरे सारे characters जो हैं वो जब जैसे कि मनमर्जियां केदारनाथ के बाद लगता है इन लोगों के अलावा कोई ये प्ले कर ही नहीं सकता था. अभी जब मैं मेंटल आप देखते हैं रशेस वगैरह पे, वन सिट्स एंड ओ माय गॉड, राजकुमार और कंगना के अलावा कोई ये पुल ऑफ कर ही नहीं सकता. तो आई बीन वेरी लकी. तो इन दोनों की परफॉर्मेंसेस आल्सो हैव आर समथिंग वन शुड रियली लुक फॉरवर्ड टू. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट मेंटल है क्या. Alright, so I was speaking to Vishal Bharadwaj a few days back, and so we had this session at Jashn-e-Rekhta, that's an Urdu festival, and we spoke about that what is the importance of talaffuz, चाहे वो गायकी में हो, चाहे वो even dialogues में भी हो, because बहुत बार हम लोग जो तलफ़ुज़ सुनते हैं वो ऊपर नीचे होता है. आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा होता है. ख्वाब को ख्वाब बोलते हैं, और हर कोई खिलजी बोलता है, खिलजी तो कोई बोलता ही नहीं है, तो गालिब को गालिब होता है, दैट वे. सो जैसे एक राइटर की कितनी जिम्मेदारी है कि मेक श्योर करना कि कंसिडरिंग आप अमृतसर से हैं, जहाँ पर एक उर्दू का चलन बहुत नेचुरल तरीके से आता है, बिकॉज वो रची बसी है वहाँ पर लोगों के बात करने के अंदाज में. कितना इम्पोर्टेंट है दैट द प्रोनाउंसिएशन एंड द तलफ़ुज़ ऑफ द एक्टर्स शुड बी राइट. अगर आप जनरली मुझसे पूछे तो ठीक है, थ्योरी में हाँ आपको यू शुड टेक केयर, बट मेरे लिए एज अ स्क्रीन राइटर मेरी कमिटमेंट है कि मेरा कैरेक्टर जो मैंने जो मेरी रचना है, जो मैंने कैरेक्टर लिखा है, उसको वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या उसके इन्फ्लुएंसेस हैं, क्या वो गालिब और गालिब का फर्क जानता है, क्या उस कैरेक्टर की ये नीड है कि वो इसका उच्चारण एक बहुत सही तरीके से करे, या फिर वो एक चलती फिरती हिंदी बोलेगा, या फिर वो एक मिक्स्ड माई कमिटमेंट एज अ स्क्रीन राइटर आई फील is limited to the character that I've created. अच्छा, you feel that I feel कि अगर supposing जैसे रूमी, अब रूमी अगर 10 साल पहले मैंने लिखी होती तो रूमी का पंजाबी या विकी की जो लैंग्वेज है ये बहुत अलग होती. इसमें अभी आपके कितने इन्फ्लुएंसेस हैं, मतलब इंग्लिश वर्ड्स, हिंग्लिश, बिकॉज ये इन्फ्लुएंसेस आज की जनरेशन में हैं,
तो आप एक सेंटेंस बिना एक अंग्रेजी का वो शब्द लिए या इंग्लिश या उसको तोड़ मड़ोड़ के आप जो एक नई भाषा बनाते हैं, लिंगो जिसको कहते हैं, अब लिंगो बदल गया है। तो अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा कैरेक्टर अगर इस दौर का है और उसके ये इन्फ्लुएंसेस हैं कि वो ये लिंगो फॉलो करता है, टिंडर पे है, इंटरनेट पे है, तो वो वही भाषा बोलेगा, वो उससे बाहर जाके एक बहुत साफ भाषा नहीं बोलेगा। सो एज a screenwriter, you may not agree with me, but as a screenwriter, my commitment will strictly be to the character I create. What you're saying is right. Because the job of a movie is not to tutor people or to just make them learn. They can learn it अगर अपने आप से वो जो भी चाहें, but that is not the job. It has to stick with the character. But I think many a times certain things maybe can be presented rightly. Like जैसे आप पंजाबी कैरेक्टर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी इज़ फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, बट द फैक्ट इज कि दैट पंजाबीज आई थिंक जैसे आपका एकदम बिल्कुल साफ सुथरा आपका तलफ़ुज़ है, सो इट इज़ समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द पंजाबीज दैट आई नो, इवन जो यंगर जनरेशन है, उनका तलफ़ुज़ भी साफ होता है बिकॉज घर में सुनते ही वही हैं वो। हाँ जी बिल्कुल। पर क्या आपको जैसे रूमी, विक्की और रॉबी में ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जाहिर सी बात है वो फिल्म को जो पूरा रचा बचा है अपनी दुनिया काम आप लोगों ने किया है वो अलग लेवल पे है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट लेकिन एक इवन जैसे गानों में बहुत एक कॉमन सी चीज़ हो गई है कि वो उसको जिस तरीके की वो होता है कि ख्वाब होता है, वो एक it's something which is इसमें एक और भी बात होती है। मैं आपको बताऊं मनमर्जिया में क्या हुआ था, एक और फीडबैक आया था जो आपने क्योंकि सवाल पूछा है मैं आपको बताना चाहूँगी। मुझे ये कहा गया था कि आपने ना शायद बहुत ज़्यादा पंजाबी बहुत ज़्यादा फ्लेवर डाल दिया तो लोगों को समझ नहीं आ रही है, यूपी वगैरह में लोगों को समझ नहीं आ रही है, आपको थोड़ा उसको टोन डाउन कर देना चाहिए था फ्लेवर को, डायलॉग समझ नहीं आ रहे। तो अब ये अब मैं जब अगली फिल्म लिखूंगी अपनी, जरूर मेरे जहन में ही रहेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं स्क्रीनिंग में भी आई थिंक अनुराग की मदर ने बोला था, वो लखनऊ से यूपी से है, उन्होंने बोला मुझे कुछ डायलॉग्स तो समझ ही नहीं आए। तो अब नाउ अगेन इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट कि क्या मैं उनको इतना रियल रखूं टू द एनवायरनमेंट कि क्या मैं इतना तक का रखूं कि ज्यादा लोगों को समझ आ जाए। तो मेरे दिमाग में वो चल रहा है क्योंकि मेरे को मनमर्जिया में ये फीडबैक मिला और कई लोगों ने बोला कि यार ये तो तुमने पंजाबी फिल्म लिख दी है, अब ये हिंदी बेल्ट में कैसे समझ आएगी, अब ट्रेड के कुछ लोगों ने बोला। तो अब मेरे दिमाग में ये बात जो आपने मुझसे पूछी दूर तक नहीं है कि क्या मैं उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं, मैं सोचूंगी कि क्या मेरी कहानी ज़्यादा लोगों को समझ आ रही है तो क्या मुझे उसकी रियलिज्म या उसके जो उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, विल हैव टू लेवल इट अ लिटिल बिट। तो मैं तो डायरेक्शन में सोच रही हूँ। बट अब आपने विशाल जी से बात करी है तो आई गेस इस डायरेक्शन में भी सोचेंगे। बट देयर आर डिफरेंट थिंग्स टू टेक केयर ऑफ बिकॉज जब आप सिनेमा देख रहे हैं तो वो एक जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं तो बहुत पर्सनल सा एक एक्सपीरियंस है, दिस इज फॉर अ लार्ज ऑडियंस। तो कभी कभार बिकॉज इट्स रीचिंग आउट टू सो मेनी पीपल तो शायद उसको थोड़ा टोन डाउन करना पड़ता है। मेरा एक लाइटर वेन में एक आपसे सवाल है, क्या आपने वकालत के लिए भी आपने क्या पढ़ाई करी हुई है? आपको क्या लगता है? आप बहुत अच्छी वकील हो सकती हैं। थैंक यू। बिकॉज आप अपने पक्ष को सामने रखने में बहुत कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट दे सकती हैं, व्हिच इज लाइक अमेजिंग। Rapid fire with Kanika Dhillon. So, best compliment that you ever received for your film Manmarziyaan? Okay, the best compliment was from Anurag Kashyap. Actually, दो थे। पहला कि उन्होंने मुझे कहा जहाँ मेरी देवडी ख़त्म होती है वहाँ से मनमर्जियाँ शुरू होती है। तो मैं अनुराग कश्यप की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ forever, तो कमिंग फ्रॉम हिम इट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं यूजुअली दूसरों की लिखी हुई कहानियाँ कभी नहीं करता एंड दिस स्टोरी हैज़ कंपेल्ड मी टू डायरेक्ट एंड अगेन दैट जस्ट मेड माई वीक मंथ ईयर। एंड देन फिर उन्होंने तीसरी बात जो कही जो आई वुड लाइक टू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, जब हम अमृतसर गए तो वो मुझे कहने लगे कि ये कोई वही लिख सकता है जिसके साथ ये हुआ हो, तो अब मुझे बताओ यहाँ रॉबी कौन है और विकी कौन है। तो इन्होंने जाके मेरी सहेली जो मेरी बचपन की सहेलियाँ अमृतसर में मुझे मिलने आती सेट पे, उनको साइड पे लेके जाते थे, पूछते थे बताओ विकी कहाँ है, कहाँ रहता है। सो आई वाज लाइक अनुराग प्लीज। सो आई वुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि उनको लगा कि इतना रियल है कि ये घटा है, ये हुआ था। तो मैंने रैपिड फायर का रैपिडली आंसर नहीं दिया बट ठीक है। तो क्या ये हुआ था? नहीं। ओके, योर चाइल्डहुड क्रश? शाहरुख खान। लास्ट थिंग यू गूगल फॉर? Last thing I googled for Faridoon. You did? Yeah. Okay.
I just wanted to know कि आप किस तरह से क्या सवाल पूछने वाले हैं. So I wanted to just figure out, but मेरा इंटरनेट नहीं चला रास्ते में, धोखा दे दिया इंटरनेट ने. Okay. If a movie was made on your life, what would be the title of it? Unbox. Oh, that's interesting. What word would you add to the dictionary if you could, and what would it mean? Oh God, Good that's such question a for a writer. responsibility. Emotional claustrophobia. What does it mean? Emotional claustrophobia is something I think which is very important to me as a writer, because मुझे अगर कहा जाए कि ये कमरा हर तरफ से बंद है, सारे दरवाजे बंद हैं, तो मुझे बाहर जाना है, मैं उस कमरे में नहीं बैठ पाऊंगी. और अगर मुझे कहा जाए कि सारे दरवाजे खुले हैं तो मुझे बाहर नहीं जाना, मैं अंदर ही बैठी रहूँगी. एंड आई फील दैट जिन लोगों को ये होता है इमोशनल क्लॉस्ट्रोफोबिया, बहुत लोगों को होता है, दे डोंट रियलाइज उनको होता है, दैट काइंड ऑफ ऑल्सो डिफाइंस देयर वर्क. अगर आपने बोला कि ये कैरेक्टर सिर्फ ऐसे, ये पैट्रियार्की में ये लड़की अपने बाप की बात सुनेगी, मुझे होगा पर क्यों सुनेगी, कहाँ लिखा है कि सुनेगी. तो इमोशनल क्लॉस्ट्रोफोबिया इज समथिंग आई थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो आज के दौर में, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं. टू एक्सेप्ट थिंग्स जस्ट बिकॉज दे आर बीइंग टोल्ड एंड टू फॉलो इन लाइन, नो. Everyone should have an emotional claustrophobia right now, given the day and age we are living in, and we should ask questions, and we should kind of, अगर दरवाजा बंद है आपको कमरे के बाहर जाके देखना चाहिए कि क्यों बंद है और क्यों जाना चाहिए बाहर. बहुत दिलचस्प. Yes or no? Okay, so considering it's rapid fire, थोड़ा सा quickly आप कर दीजिएगा please. Okay. Have you ever been offered a role in movie? Farah has used me as Thakeli Dulhan in Om Shanti Om. You were the assistant director. I was assistant director and I was tricked into doing Thakeli Dulhan. They said long shot है, किसी को नहीं देखेगा, मेरा close up लगा दिया. My mother and father freaked out कि ये क्या कर रही है वहाँ पर. Sorry, लंबा क्वेश्चन सवाल आंसर दिया. No problem. Do you always wear your seat belt? No. And it's very wrong, but I don't. Have you ever bribed a traffic policeman? No. You've never. Okay. Have you ever flirted with the idea of directing a film? Yes. Will you direct a film? Yes. Have you ever slapped a guy? No. Okay. Hot or not? Following things, whether they are hot or not. Night out with friends? Not. Slangs? Not. Live-in? Yes. Hot. Hot. Drinking? Depends. Okay, hot. Long drives? Not. Horror novels? Hot. If you could ask the following people a question, what would you ask them? If you could ask a question to Shah Rukh Khan. Can I work with you in your next film? All right. If you could ask a question to Anurag Kashyap. Can I work with you in your next film? Anything else apart from that? अनुराग कश्यप से क्या पूछूं मैं, इतना सब कुछ तो पूछ चुकी हूँ ऑलरेडी. अभी कितना खून पीऊंगी उनका मैं. If you could ask a question to Naseeruddin Shah. When you see Naseeruddin Shah on screen, you know there's this entire world that is reflected in his eyes. वो कहाँ से लाते हैं, कहाँ से आता है वो सब. If you could ask a question to Amrita Pritam, obviously she's not anymore, but if you could have asked a question to Amrita Pritam, what would you have asked her? That how did she breathe through it, through that entire thing of this unrequited love? How do you live? Is it even possible? Did she kind of regret the decisions that she took? If you could have asked a question to Manto, if he would have been alive. What was his inspiration, perhaps? What inspired him? Kind of. Yeah, जैसे मुझे लगता है मेरा seed of all my work is emotional claustrophobia. I would want to know what is his seed. वो कहाँ से उनकी शुरुआत होती है. If you could have asked a question to Ismat Chughtai. इतने दिग्गजों से आप एकदम ऐसे मुझसे सवाल पूछने को कह रहे हैं. मैं एज अ राइटर तो मेरा यही सवाल होगा कि कगार पे हैं आप. अरे अस्तगफिरुल्लाह. नहीं देखिए, मैं आई एम अ ग्रेडी राइटर और मैं सबकी वो ही जानना चाहूँगी कि ये कैसे सोचते थे, कहाँ से सोचते थे, कहाँ से आता था, कहाँ से इन्होंने जी लिया, कहाँ से सीख लिया. तो मेरे मन में तो चोर है. आप ये जितने भी नाम लेंगे उनसे मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी कि कहाँ, where was the seed, where was the origin, where was the germ. मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ बस. मैं आपको बता रही हूँ, राइटर्स आर वेरी डेंजरस. वो कुछ इमोशनल एक्सपीरियंस भी होता है तो वो लिख ही रहे होते हैं, किसी से मिल रहे होते हैं तो वो लिख रहे होते हैं, या चुरा रहे होते हैं, या आपकी कहानी या आपका इमोशन या आपका एक्सपीरियंस. और जो दिग्गज लोग इतना कुछ लिख गए हैं उनसे भी हमको चोरी करनी है कि अरे कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, कितनी ब्यूटीफुल मोमेंट, अरे इन्होंने कहाँ से सोच ली. दैट हंगर एंड दैट
that thing to kind of get to that source is the most important thing. तो आप जितने भी ये नाम लेंगे मैं उनसे वहीं जाके एक ही सवाल पूछूंगी कि आप यहाँ पर कहाँ से पहुँचे, ये रास्ता कैसे लिया, कहाँ, हम भी वहाँ से होके आते हैं. तो क्योंकि वो है नहीं, उनसे बातचीत नहीं हो सकती, तो I can only kind of wish for it. One of the reasons why I asked about these particular names, because apart from being great writers, they also chose controversial subjects. Isma Chughtai, she chose to write Lehaf at a time when even it would have been unthinkable maybe. Talking about the entire lesbian association, and Manto, whatever he wrote. There were so many. For that matter. And same with Amrita Pritam. Even she was an extremely progressive woman for her time, for any time whatsoever, and she lived by her own terms and conditions. Absolutely. So considering that even जिस तरीके के आपके views हैं, so I thought that I was taking those names from that perspective. नहीं बिल्कुल, देखिए Not merely because of them being writers. नहीं, देखिए मैं वही कह रही हूँ कि you know to be able to question where we live in खास नहीं है. खास बात ये नहीं थी कि वो अपने टाइम्स जहाँ पर भी वो थे, जिस जगह पे वो थे और वहाँ पर वो कुछ सवाल उठा रहे थे, वो आप, that is your job as an artist, as a writer, as a painter, as anyone who is an artist of their times, that is their job to question the status quo. अगर आपकी आवाज़ अलग से निकल के नहीं आई या आपने कुछ सवाल नहीं पूछे या किसी को इंस्पायर नहीं किया, तो आप वहाँ उस दर्जे पे नहीं होंगे. बट हाँ, मेरी क्यूरोसिटी ये है कि जो आपने रास्ते अपनाए या जिन गलियों से आप गुजरे, वो कहाँ से और वो क्यों? That's very interesting. Okay, so Kanika Dhillon, wonderful talking to you, and I've really enjoyed this conversation. Thank you so much. And so thank you very much for coming to Bollywood Hungama office, and looking forward to all your future ventures. Thank you. And keep on being the free-spirited voice that you are. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure. Thank you. Thank you. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Hi, this is Kanika Dhillon and you're watching Bollywood Hungama.